हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग प्लस ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट। इस रोबोट के ऊपर हम एक OLED डिस्प्ले को भी लगाने वाले हैं ताकि हमें रोबोट की आईब्रोज और आइज दोनों शो कर सके और कुछ यूनिक रोबोट बन सके। फ्रेंड्स, इस रोबोट को बनाने के लिए मैं अर्डिनो उनो बोर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। इस रोबोट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कार को असेंबल करना है। यहाँ पर मैं एक रेडीमेड एक्रेलिक कार चेसिस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो। तो चलिए हम फटाफट से इस कार को असेंबल कर लेते हैं। इस कार में हमें मिलती है कुछ बियो मोटार्स, कुछ नट बोल्ट्स और एक्रेलिक शीट का कटा हुआ एक कार का चेसिस। तो चलिए हम इसे फटाफट से माउंट कर लेते हैं।
young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. फ्रेंड्स, इन चारों मोटर को ऑपरेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस L29ATN मोटर ड्राइवर का। इस मोटर ड्राइवर में हमें दो चैनल मिलते हैं, लेफ्ट और राइट। हर एक चैनल को हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं इन चारों पिन आउटपुट से। तो अब मैं इस मोटर ड्राइवर को इस कार चेसिस के ऊपर फटाफट से चिपका देता हूँ और वायरिंग भी कर देता हूँ। Hindsight is fleeting when your heart's bleeding and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong and